प्लॉटिंग जो है वो यहीं पे थी, ये पिशावर में। यस सर, इधर था स्टार्टिंग। अच्छा अच्छा। तूर सीनीन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ मेरी क्लियर है आपको? जी सर। ओके ठीक है। इमाद। 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 आजान। आजान अहमद। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, ये इमाद जो है ये हमारा वो है, फॉरेन स्टूडेंट्स है। यस सर, ये यस सर, फॉरेनर फॉरनर। है। जी अजान ठीक है, आपकी आवाज़ तो सुन ली। फॉरेनर है सर। ओके ओके। इमाद, कैन यू हेयर मी? इमाद तवफिक। चले, कोई प्रॉब्लम लग रहा है, देयर सम इशू। इमाद। यस सर। ओके, कैन यू हेयर मी? यस यस। राइट नाउ यू आर इन हॉस्टल? यस, आई एम इन हॉस्टल। ओके, विच हॉस्टल? हॉस्टल 4 5? हॉस्टल 5। ओके ओके ओके। तो आमिर, कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में? सर आई थिंक 44 है या कुछ 42 है सर। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, बाकी लोग भी हों तो फिर स्टार्ट लेते हैं क्लास का। ओके सर, मैं उनके साथ कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है ओके।
सर जी CR आए हैं सर, मोहम्मद नोमान। CR आगे। यस सर। ओके। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। CR का क्या नाम है? मोहम्मद नोमान सर। मोहम्मद नोमान। ठहरे एक सेकेंड। ठीक है। कैसे हैं नोमान? शुक्र है सर, आप सुनाए। शुक्र है। आप किधर अभी हॉस्टल में? नो सर, मैं घर में होता हूँ। अच्छा, कहाँ पे है घर? यूनिवर्सिटी रोड पे, अरबाब रोड। अच्छा ठीक है, पेशावर में। ओके। सर। ओके। इरफान अली मेरे टी हैं, वो आज ज्वाइन करेंगे तो आपका नंबर भी ले लेंगे, वो अपना नंबर भी दे देगा ताकि ओके सर। उसमें लिंक हो जाए ना आप लोगों का। ओके सर। तो बाकी स्टूडेंट्स का कुछ अंदाजा है? आ रहे हैं? क्या करें? क्लास शुरू कर लें, थोड़ा वेट कर लें, क्या करें? सर 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं सर। चलें, ठीक है। ओके सर। मीनवाइल अगर कोई क्या कुछ बोलना चाहे, कुछ कहना चाहे, मोस्ट वेलकम, जब तक वेट कर रहे हैं। आफाक अहमद। यस सर। कैसे हैं आफाक? शुक्र अल्लाह का सर। कहाँ पर हैं? सर हॉस्टल में। अच्छा ठीक है। अब्दुल मुसव्विर। यस सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर। कहाँ पर हैं? सर एबटाबाद। कहाँ पर जी? एबटाबाद सर। ओके ओके, ठीक है। नोमान मेरे ख्याल में स्टार्ट कर लेते हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, जब तक फिर बीच में और भी ज्वाइन कर लेंगे। यस सर। ओके ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एवरीबॉडी। द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, सो जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। अच्छा जी, so I welcome you all to this new semester, new class. I think this is will be your first class, Noman.
This will be your first class in the new semester. Yes, sir. Okay. So let me begin with the introduction of this course and we will proceed further. Today is the introductory class. The course, you know that it is project planning, management, and engineering economics. It is a 2-credit-hour course. And the course number is 407. And I believe this will be one of the very important courses which you are going to study in your, in your bachelor's of engineering. And you will realize about its importance when we will proceed further into the course work in the subsequent classes, throughout this semester. So I'm expecting that it will be interesting. I will try to make it interesting, but definitely it is a subject you have to do some self-study as well. It will be a very important subject. I believe I will explain to you later on how this subject of project planning and management is used immediately when you graduate in the field. So hopefully it will bring more interest to you. My first advice would be that please be in time in your class. When we were having physical classes, I always made sure that student would come in time because I myself always try to be in time. I reach the class 5 minutes or 10 minutes earlier. So the first thing which I will advise as a teacher would be always be disciplined. If time is 8 o'clock, I'm just not talking about the class, but if you have a meeting, if you have an appointment, let's say the time is fixed as 10 a.m., then reaching 15 minutes earlier, which is 9:45, that means you are in time. If you are reaching at 10 o'clock at the exact time, then please consider that you are late. So this should be the definition of being in time. This is the first thing which I wish to teach you. These things are very critical, are important for your success. Okay. Before I go into further detail, this is always a standard practice that I ask the introduction of the students, that who they are, so that I know them. Unfortunately, because of this pandemic, we are not meeting physically. It's not a physical face-to-face class, which generally I believe is more interactive, which I generally believe is more interesting. But anyways, we don't complain. This is a test of time. So let it be like that. No problem. We will not complain too much about that. Although the worrying part of this pandemic is that your health is okay and you don't suffer from this disease. Hopefully, I don't know, maybe some of you might have experienced it already, but that is definitely something worrying and you should be very careful of. So the students are right now 26. I don't know how would we start, because in the class physically we could go one by one, but in this case I don't know how should we do. Noman, any idea कैसे करें ताकि फिर repetition भी ना हो? अगर मैं यहाँ से नाम बोलूँगा तो फिर ये भी हो सकता है कि कोई बाद में ज्वाइन कर ले तो फिर इशू होगा. क्या करें? सर क्लास में तो वो सीट बाय सीट होती थी. जी जी सर यहाँ पे रोल नंबर वाइज हो जाए, क्लास नंबर वाइज. हाँ, ये दिस इज अ गुड आइडिया. तो लेकिन जब कोई रोल नंबर, हम फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकली रोल नंबर 1 करते हैं, फिर रोल नंबर 2 3 4 मिसिंग है, हम 5 करते हैं, तो 2 को फिर खुद ही हम बाद में कह देंगे जो इन बिटवीन मिस हुआ है वो खुद कर ले. मेरे ख्याल में ये भी बात ठीक है. यस सर. ओके. तो आई विल एक चीज जो इसमें मैंने नहीं लिखी वो आप जरूर ये भी लिख दें कि योर लोकेशन. I generally do not ask about location, but because of these online classes, I would like to know your location, because it helps me plan accordingly, because some of you might be having not a very strong connection. So if there is an issue, so I would know that.
तो let's start with the roll number. कहाँ से शुरू होते हैं आपके नोमान? 178. Okay, so we start with 178 and we'll go further, right? So I would like to know your name and definitely your class number. You will tell yourself. Then what is your CGPA so far? अभी तक जितने भी results आए हैं, whatever is the case, what is your last known cumulative GPA? Then I always ask my students a question, which is generally very interesting, that why are you in civil engineering? Was this your personal choice? The merit made you land over here? You were asked by your family or friends or relatives that you should come and you must come to civil engineering. And whatever is the case, maybe you came by choice, but you are not satisfied now. Maybe you came by chance and you are satisfied. Maybe you are by force and you are very happy that somebody asked you to join civil engineering. So what is your level of satisfaction right now? So definitely if you're not satisfied, so maybe we would like to hear what is the reason. And then what is your final year project very quickly? And what is your future plan? You are going to go for a job? Are you going to go for higher education? Very quickly, briefly, so that I can sort of know each of my student. So let's start from 178. Class number 178. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Salam, Ahmed Faraz. My name is Ahmed Faraz, class number 178. I am from Swabi, and my CGPA 3.61. How much? 3 point? 61. Okay. And I have got admission in civil engineering by choice. Okay. No, Are by you- chance. It was by chance. Okay. And my final year project is my final year project is the numerical modeling of hollow reinforced beam using Athena software. Okay. And future I want to go abroad for higher studies. Okay. ठीक है. Are you satisfied in civil engineering? Yes, sir. Now I'm satisfied with it. Okay. Okay. Good. 178 के बाद, I don't know, 179. Okay. Thank you. Thank you, जनाब. 179. नोमान आप मेरी हेल्प करेंगे कि 179 है या नहीं है? Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, my name is Nurullah, and my class number is 179, and Okay. my CGPA is 3.5, and my Okay. location is Charsadda. Okay. I come for civil engineering, but it's my personal choice. Okay. And my FIP project is retrofitting a beam column joint using carbon zinc concrete. And Okay. my future planning is I will go for higher education or going for CSS. Okay. Why CSS? Why? CSS is because it's my motivation that I will go for CSS to help the pupils that need that needs us. So that's why that's my motivation to help that pupils. So you think that by civil engineering you cannot help the people? No, sir, I can't say that by civil engineering we can help that people, sir. But I try my best that in every field that I will go, so I will help those people that need us. Maybe in civil engineering you start constructing low cost housings which nobody generally is very few people can afford, and maybe because of your help many people start getting their own houses. Don't you think this is a noble cause? Yes, sir. That's why I will say that I will go for higher education or I will go for CSS. So I will stack both the options for myself, sir. Okay, right, good. So next is 180. Thank you. 180. Sir, my Thank you, name sir. is Thank you. Ikra and my roll. So should I start? Yes, please. Sir, my name is Ikra. My roll number is 180 and my CGPA is 3.7. Okay, And sir, good. I select civil engineering by
ये इकरा थी। इकरा, आपका माइक बंद हो गया है, हमने आपकी आवाज नहीं सुनी। आपने CGPA बताया, फिर आपने कुछ मजीद मुझे। Okay, sir. Okay. So one of my teacher recommend this field to me, ओके and my final year project is an experimental investigation of the rebar slippage in reinforced concrete beam. And future plan is, inshallah, I'll go for higher education. ओके। आर यू सेटिस्फाइड विद सिविल इंजीनियरिंग? Yes, sir. एंड वेयर I'm इज यू satisfied. currently you are where are you located? In Peshawar. Okay, okay, good. Okay, 181. सर बासित एप्स नहीं है ऑनलाइन सर। ठीक है, 181 नहीं है। 182. मोहम्मद तारिक, ये सर 182. 182 भी नहीं है। सर तारिक ऑनलाइन है, माइक भी ऑन किया था फिर ऑफ कर दिए सब। ओके, मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक, आप 182 हैं? तारिक, माइक का मसला हल करें ना। माइक तो मैंने पहले कहा, ये तो बड़ा जरूरी है। अब तो एक साल, अब तो तीसरा सेमेस्टर आपका शुरू हो गया है। लास्ट ईयर इफ यू रिमेम्बर, मई में हमने स्टार्ट लिया था। सर तारिक का मैसेज आया, माइक इशू है सर। जी जी बिल्कुल, वो तो मैंने सुन लिया, वो मैंने देख लिया। तारिक को ही मैं कह रहा हूँ, तारिक ही को कह रहा हूँ कि माइक का मसला होना नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब हम मैं ये कह रहा था कि तीसरा सेमेस्टर आपका शुरू हो गया है ऑनलाइन, क्योंकि मई में हमने शुरू किया था पिछले साल, ऑलमोस्ट 11 महीने पहले। तो तारिक, माइक का मसला हल करें, बाकी भी किसी का नहीं होना चाहिए नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इंटरेक्शन भी होती है ऑनलाइन का एक पर्पस, नो डाउट। देखें उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि अगर तो प्योरली हमने रिलाई करना है जस्ट वन साइडेड कम्युनिकेशन में, फिर तो आई टोटली एग्री कि वी डोंट नीड ए माइक। सो आई विल जस्ट बी डिलीवरिंग माय लेक्चर एंड देन व्हेन माय लेक्चर फिनिशेस एवरीथिंग इज डन ओके। और बल्कि फिर तो आपकी जरूरत भी नहीं है, फिर तो मैं किसी भी टाइम पे अपनी कन्वीनियंस पे, हमें क्या जरूरत है कि 8 बजे हम शार्प मिलें और मैं लेक्चर को रिकॉर्ड भी करूं और अपलोड भी करूं। फिर तो एनी टाइम आई कैन डू द रिकॉर्डिंग ऑफ माय लेक्चर एंड अपलोड, which is not the case. So that is why the spirit of this hybrid mode of teaching is that we should be having an interaction as well, ताकि आपका कोई क्वेश्चन हो, टीचर का कोई क्वेश्चन हो, तो हम आपस में कम्युनिकेट कर सके। तारिक, क्लियर हो गया? तारिक, अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। 183 जी तारिक। तारिक कहता है 1 सेकेंड। ठीक है तारिक, तोड़ निकालें। खैर, हम अगले इंट्रोडक्शन करते हैं, वेट नहीं करते। आप जब नेक्स्ट स्टूडेंट के बाद फिर बीच में इंटरप्ट कर लें, खुद ही आ जाए। 183 है, नोमान मेरी हेल्प करें। 183 ये सर 183 में हूँ सर। अच्छा, मोहम्मद नोमान खुद है, ठीक है, गुड। Yes, sir. जी And my name is Mohammed Noman. My class number is 183. ठीक है, My CGPA is 3.1. Okay. Civil engineering is my personal choice. ओके। And sir, so far satisfied. Final year project, sir, FRP fiber reinforced polymer. And Okay. future plan, sir, business. Sir. बिजनेस, ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस? सर इसी फील्ड में फर्म वगैरह खोलना है सर, कंस्ट्रक्शन फर्म। ये कैसे ख्याल आया आपको नोमान? सर ये अब्बू की ख्वाहिश भी थी, अच्छा, और असल में मुझे जॉब करना पसंद नहीं है, तो अपने बिजनेस ही प्रेफर ठीक करता हूँ सर। ओके ओके। वैसे मैं आई वुड लाइक टू मेक ए कमेंट ऑन मोहम्मद नोमान्स अप्रोच, कि मोहम्मद नोमान is saying that I want to be an entrepreneur. Entrepreneur means that he wants to have his own business, which I believe is something very courageous, and I would
want that as many as possible students of graduates, when they graduate, they go for their own business, because for many reasons. The first reason is नोमान आप माइक को फिर ऑन कर लें जब बोलना चाहें, जब आप कमेंट करना चाहें माइक ऑन कर लें. Okay, sir. So the one reason is it is expected from higher education that our graduates would have the capacity and ability to do independent working. This is one of the fundamental goal. How much we achieve it or we don't achieve it, that is another aspect. But the one of the objective is that you should have independent thinking, self-learning, and so on and so forth. Secondly, there will not be enough jobs. I mean, especially in the government sector, which is limited. We will definitely have, and we should have, good number of jobs in the private sector. That is also good, but it is preferable that it is not possible that all of you will become entrepreneur, but the more out of you, more in number, become entrepreneur. They go for a business. You create jobs for others as well, and that pushes the society, because you try to find the means of getting the business, for example. So you might go for projects in KP, in Punjab, in Sindh, in Azad Kashmir, or whatnot, and you may go even abroad for project hunting. So that brings a lot of opportunities for others as well. So that is definitely appreciated, I would say. And by the way, we have a topic of I think in the last classes, maybe after the midterm, we were talking about the business organizations, and this subject is revolving around project planning and management, and we'll also see the project life cycle. So that will also probably help you to understand how projects are done in the public sector. So I encourage that. So good. But one thing, you must be careful. You must try to get some experience. It depends on you. You go for a job initially, or you get the help of your elders or some close relatives who are good in business, because maybe as a fresh engineer, you are not exposed to so many things, the requirements. For example, doing a business is just not a technical job. You have to be a good manager. You have to be a good decision maker. You have to be a risk taker. You have to be knowing financial management. You have to be knowing accounting. You have to do the business hunting, and you have to do with public relationing. There might be court cases. There might be some other institutional interventions or interactions which you have to manage. So definitely it requires a lot of skills. And once you are preparing for such skills, so definitely you become a very good engineer. So that is why, if probably all of you are looking forward for this approach, you will start polishing yourself to a higher level. So which is good. So before I go further, Noman, any comments from your side before I go further? No, sir. Sir, thank you for advice, sir. Okay. So next is 184. 184. Noman, मेरी help करें? Yes. Sir, Muhammad Tariq, sir. Muhammad Tariq, class number? 182, sir. Okay, Tariq, good. Mic का मसला हल हो गया. Well done. Okay, sir. My CGPA is 3.47, and I joined civil engineering by my own choice. My FYP is on retrofitting of bridge girder using FRP, and my future plan is job with higher education. Okay. Are you happy with your civil engineering? Yes, sir. I'm happy. I'm satisfied. Okay, good. ठीक है तारिक. 184. सर अब्दुल मुसव्विर नहीं है? सर अभी ऑनलाइन था, लेकिन मुझे अभी मैसेज किए है, उस नेट का प्रॉब्लम आ गया. चलें जब आ जाएगा तो उससे बात कर लेंगे, नो प्रॉब्लम. तो 185. 185. जीशान खान सर वो भी नहीं है. अच्छा, अब बताएं, नेक्स्ट बताएं, जो भी नेक्स्ट कौन सा है? 186 हमजा जावेद.
Yes, sir. My name is Muhammad Hamza Javed, and my class number is 186. I am Okay. located in Peshawar. Okay. My CGPA so far is 3.62. Okay, good. I came to civil engineering by my own choice, and so far I am satisfied. My FIP final year project is in environmental engineering, which is to propose a sustainable solution for different engineering projects. And my future plan in life is to go for higher education Good. abroad. Very good. Very good. Very good. And project seems to be also interesting. Yes, sir. Okay. ठीक है, thank you. और next कौन होगा नोमान? Sir, 188 Inamullah. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, my name is Inamullah, class number 188, and my CGPA so far is 3.1. Now I am coming in civil engineering by my own choice, and my final project is in transportation engineering. The title of FIP is Equivalent Single Axle Load Calculation for Local Traffic. And future plan is that I will go in civil field or any other civil faculty for job. Okay. So you're doing in transportation, with Dr. Raved? Sir, Assalam, sir. Okay, Arsalan. Okay. ठीक है. ठीक है. Good. Next, please. नोमान नेक्स्ट का बता दें. Bashir Ahmad, 189. Sir, बशीर. वो नहीं। बशीर है? नहीं है। नहीं है बशीर? No, sir. चलो नेक्स्ट बता दें. Sayyid Muhammad Uzaifa. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम मुज़फ़्फ़र. क्लास नंबर क्या है? क्लास नंबर? Sir, 190. 190. Okay. And my CGPA is 3.5. And civil engineering was my own choice, and I am satisfied with it. And my final year project is to study beam cooling joints using modified concrete, and my future plan is to go for MS. ठीक है. डॉक्टर काजी समीउल्लाह के साथ कर रहे हैं प्रोजेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. लोकेशन कहाँ पर है आपकी? Sir, Hyderabad. अच्छा ठीक है. ओके. ठीक है. थैंक यू. नेक्स्ट नोमान नेक्स्ट बताएं. Usama Farid. Assalamu alaikum, sir. My name is Usama Farid, class number 191. My location is Peshawar. My CGPA so far is 3.1. I came to civil engineer by choice, and I'm satisfied now. My final year project is to propose sustainable model for future engineering projects, and my future plan is to go for MS and for future studies, further studies. वेरी गुड. ये अभी जो पिछला स्टूडेंट थे उन वो भी और आप इकट्ठे कर रहे हैं मेरे ख्याल में. जी सर. टीचर कौन है आपके? मंसूर साहब है सर. ओके ओके गुड. नेक्स्ट प्लीज. 192 Zarak, sir. वो एब्सेंट है अभी तक. ओके ठीक है. नेक्स्ट आ जाए. Abid Ali, 193. सर वो भी नहीं है अवेलेबल. ठीक है. सुलेमान, 194. सर वो भी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट चले जाएं. कोई इशू नहीं. 195 Shehran. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. My name is Muhammad bin Adil Shehran. My class number is 195. Currently, I am in Peshawar, and my CGPA is so far 3.27. Civil engineering I did by my choice. I am satisfied now. My final year project is in to develop a model for sustainable projects in Pakistan, and my future plan is to be an engineer in a field. Okay, very interesting topic. टीचर कौन है आपके? Engineer Mansoor. अच्छा, good, very good. ठीक है, thank you. Next, please. Obed भी नहीं है सर. ठीक है. Next देख ले. असदुल्ला तो परमानेंट एब्सेंट है. मोहसिन.
सर मोहसिन भी नहीं है उनमें। ठीक है, कोई नहीं, चलते जाएं, जो जो अवेलेबल है उनसे कर लेते हैं। उज़ैर सरदार, मुद्दस्सिर अहमद खान। Yes, sir. जी जी। So my name is Mudassir Ahmed Khan and class number is 200 and my CGPA is so far 3.68 and civil engineering is my own choice and alhamdulillah I'm satisfied now and my final year project is analysis of Peshawar Motorway Toll Plaza using PTB Visum software and my future plan is to go abroad for higher study. वेरी गुड। और आपके टीचर कौन है? Dr. Muhammad Tariq. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। डॉक्टर तारिक इज माशाल्लाह इज वेरी गुड इन इनका ये फील्ड है। ठीक है, वेल डन। Okay, thank you, sir. ओके, नेक्स्ट प्लीज। खालिद रहमान। जी खालिद। खालिद माइक आपने ऑन किया लेकिन आवाज हमें बिल्कुल नहीं आ रही। चलें, खालिद से हम आगे चलते हैं। खालिद, आप दोबारा अपने आप को या तो रिकनेक्ट कर लें या सेटिंग्स को चेक कर लें, कुछ कर लें। जी अभी आ रही है, बोलें। And my class number is 201. My CGPA is 3.1 so far. I joined civil engineering by my own choice and I am satisfied. And my final year project is on cost impacts on Delhi in road construction of KPK. And my future plan is to do MS in project management. वेरी गुड, फिर तो आप बड़े सही सब्जेक्ट में बैठे हुए हैं भाई खालिद। Yes, sir. Alhamdulillah. Yes, sir. टीचर कौन है आपके Sir, प्रोजेक्ट के? Zainul Abidin. Sir, engineer is Sir Zainul Abidin, sir. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। जैन हमारा स्टूडेंट है। अच्छा, ही इज गुड, ही फील्ड का एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, Yes, sir. ठीक है जनाब, नेक्स्ट। Okay, sir. Thank you. शमरोज खान सर। ओके, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, my name is Shamroz Khan and my class number is 202 and my CGPA is so far 3.4 and it's my personal choice to become a civil engineer and I am satisfied right now and my final year project is to find out the amplification factor in a seismic array installed in UT Peshawar Civil Department lawn and my future plan is to go for higher study. लोकेशन कहाँ है आपकी? आप लोग लोकेशन नहीं बता रहे, Sir, लोकेशन कहाँ? I am from Waziristan. अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ नेट का इशू तो नहीं ज्यादा? Sir, आता है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, देखिए ना, ये चीज पता हो, बाकी लोग बीच में भूल जाते हैं, लेकिन एनीवेज लोकेशन जरूर बताएं। ठीक है ठीक है, वेल डन। आप डॉक्टर इरशाद के साथ कर रहे होंगे मेरे ख्याल में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्लीज, नोमान। अस्सलाम खान। वालेकुम सलाम। शहाब। शहाब मसूद। जी शहाब, मसूद हैं कि महसूद हैं? मैं महसूद हूँ सर। तो ये तो मसूद लिखा हुआ है यहाँ पे। सर ये वो गलती हुई थी सर, जो क्लरिकल स्टाफ नहीं होते सर, उन्होंने मैट्रिक में वो गलती की थी, फिर बोर्ड देकर। अच्छा, ओके ओके, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन महसूद एंड मसूद। यस सर, बिल्कुल, इसमें बहुत डिफरेंस है सर। चलें, क्या आपका नंबर है? सर जी, माय क्लास नंबर इज 203. I am from South Waziristan. Okay. And so my CGPA is 3.4 and civil engineering was my own choice and I am satisfied with it. Okay. And my FYP is in design of shear wall by using ECC, engineered cementitious concrete. Okay. And future plan is to go in any government department. ठीक है, ये प्रोजेक्ट किसके साथ कर रहे हैं? डॉक्टर सजाद वली ने भी इस पे काम किया हुआ है सर, डॉक्टर रिजवान साहब के साथ। अच्छा, डॉक्टर रिजवान के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना है? सर एक्चुअली ये वो सर फैमिली में सर हमारे तकरीबन सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, तो सर और है भी सारे इंजीनियर सर, तो वो मुझे कहते हैं कि आप भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं। तो फिर तो अगर सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, फिर कुछ किसी को तो बाहर भी होना चाहिए ना यार, प्राइवेट में, कि नहीं? तो सर हमारे घर में फिर है सर, बाहर प्राइवेट में भी है और अच्छा उसमें भी, लेकिन सर बाकी जो चाचू वगैरह और कजन है सर, ये सारे इस तरह। किस में, CNW वगैरह में है, किस में है? CNW में है, पब्लिक हेल्थ में है और वापडा में सर जी है। अच्छा, चले आपकी चॉइस है, आपकी अपनी जाती ख्वाहिश, वो सारी बात है, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके,
नेक्स्ट पे आ जाएं जनाब। Amir Ali Khan. Sir, I'm Mohammed Amir Ali Khan, belonging to Sawabi. क्लास नंबर 204, sir. 204, okay. Belonging to Sawabi, and my CGPA is 3.4. And my brother advised me to join civil engineering. And Alhamdulillah, I am satisfied now. And my final year project is about site implication factor robotic seismic array installed in Peshawar. And my future plan is to go for MS in Australia, and then later on I'll join CSS. अच्छा अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे फिर वापस भी आएंगे, सीएसएस भी ज्वाइन करेंगे, ये क्या सिलसिला है आमिर? MS वहाँ से कर लेंगे सर, फिर इंशाल्लाह यहाँ CSS करेंगे। वहां से क्या कर लेंगे? MS सर। अच्छा, तो फिर यहाँ से क्यों नहीं एमएस करते? उसके लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों, कोई और जगह भी क्यों नहीं? सर बस वो वहाँ रिलेटिव है तो बस। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। तो दूसरा ये कि जो लोकेशन, व्हेन आई आस्क्ड यू फॉर लोकेशन, आई एम इंटरेस्टेड योर करंट लोकेशन बिकॉज आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द नेट कनेक्टिविटी. It doesn't make any difference whether you belong to Kala Dhaka, you belong to Mansehra or Bannu or Chitral or anywhere. That is, all of you are one and same to me. That is, I'm not asking from that perspective. My perspective is actually to know your current location. Where are you right now? Because that gives me that what locality you are in and how would be your internet. But generally, you see, location is not part of my introduction. I take everybody, irrespective of wherever you are. That is absolutely, I mean, that's not the point to know. So the point to know is your physical location with respect to internet connectivity. Anyways, this is a point which I wanted to clarify. Anyways, please go ahead. Noman, next. Sir, my name is Azan Ahmed. My class number is 205. And at the moment I am in Peshawar. Okay. My CGPA is 3.33. I am here in civil engineering because it was my parents' choice, and at the same time it was also my choice. But now I am very satisfied, and I would like to go further in this field. So I am satisfied. Final year project is experimental investigation of shear wall, which will be made of engineered cementitious composite, which will be then tested by quasi-static load test. My future plan is to become a structure or maybe a geotechnical engineer from abroad. Okay, okay. ठीक हो गया. Next. फरियाल सर नहीं ज्वाइन नहीं किया अभी तक. ओके, ठीक है. अफान खान सर उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया. ठीक है. मोहम्मद शाकिर उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया. ठीक है. फहीमुल हसन वो भी नुमान, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे अभी. नोमान, आपकी आवाज नहीं आ रही. अगर आप बात कर रहे हैं तो आई कांट हियर यू. चले नोमान, जब तक उनकी कनेक्टिविटी का इशू रिजॉल्व होता है, आप में से जो भी तरतीब में 205 तक हम हो गए, उन्होंने 3-4 नाम लिए हैं विच आर नॉट अवेलेबल. सो एनी वन ऑफ यू हु थिंक इज द नेक्स्ट, सो प्लीज गो अहेड. Two 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212. कोई भी नहीं है इनमें से? बैकअप सीआर कौन है हमारा? बैकअप सीआर में आमिर हमें क्विक रिस्पांस करता है. आमिर, आमिर इनमें 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो नहीं पहचानता हूँ कि किसका क्या नंबर है.
213, 211, 212, 213, 214. जी जी सर नहीं है सर, उसके बाद 216. जी 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 Turesin Sinin. My name is Surya Sineen. My class number is 216. My current location is Peshawar. My Okay. CGPA is 3.4. I choose civil engineering by my own choice, and I am not satisfied. My final year project is unreinforced masonry, strengthening of unreinforced masonry by FRP, and my future plan is go for higher education. Okay, good. Thank you. Okay. Next, 217, 218, 219, 220, 221. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, sir. I am Muhammad Mansoor. My class number is 221, and CGPA is 3.4 so far. And I am in civil engineering by my choice, and I am satisfied. And I am doing a final year project in structure on analysis and design of lightweight concrete bridge. And my future plan is to do masters in construction management, and my location is Peshawar. Currently, Okay, good. आपने कहा lightweight bridge? Concrete bridge, sir. अच्छा, कौन है टीचर, कौन है आपके? Sir, Salman, engineer Mohammed Salman. सलमान, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. Okay, thank you. Next. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. My name is Hilal Hassan and my class number is 220, and I am doing civil engineering by my choice. My final year project is retrofitting of bridge girders by using FRP, and my teacher is Dr. Qazi Samiullah. My CGPA till now is 2.7, and I want to do masters in structure. Okay, you are happy with civil engineering? Yes, alhamdulillah. Okay, good. Okay, good. Thank you. 222. Sir, direct 226, sir. For Okay, ठीक है. 220. Sir. Walaikum assalam. My name is Hema Tawfiq. My class number 226. My location Hostel 5, and my CGPA 2, and civil engineering by choice, and final year project urban dynamic modeling, and future plan I will go to job inshallah. Okay. And especially in your case, I always ask from foreigners from which country they are, so at least I know which country is I am from Yemen. Sorry, please say again. I am from Yemen. Yemen. Okay, most welcome. Yes. Welcome to Pakistan. You have been here for the last 3 years or so, but at least yes. You're coming across me for the first time, so that's why I'm saying welcome. Okay, thank you, sir. Okay, thank you. Okay, anybody who is left? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam, Hizbullah. Yes, sir. Sir, my name is Hizbullah Khan. Sir, class number is 624, sir. Sir, I am from GST, sir. 624. Okay. Yes, sir. Sir, my CGPA is 3.0, sir. And civil engineering is my own choice, sir. And my family choice. And I am satisfied from civil engineering, sir. And my final year project, sir, evaluation the mechanical properties of fly ash concrete. And future plan is go for higher education. Okay, and you're in Peshawar right now? Sir, current location is Mardan. Okay, ठीक है. Okay. Thank you, sir. Okay, welcome. Anybody else? Yes, sir. Okay, Ihtisham first and then the next person. Ihtishamul Haq. Yes, please. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, my name is Ihtishamul Haq, and my CGPA so far is 2.9. Last number. 225. Okay. CGP is how much? 2.9, sir. Okay. And I am in civil engineering because by force. Okay. And I am satisfied right now.
So you must be My thanking, final project is then you must be thanking who forced you to be in civil engineering, because you are happy now. sir, I'm happy now, right? And my family. Okay. चलो And ठीक my है. final year project is in Supermud. Supermud. Okay. And my future plan is, I know I will be forced for higher education, sir. Okay. And Supermud का क्या करेंगे, किस लिए यूज करेंगे? Sir, sorry sir, I can't hear you. फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो आपने बताया सुपरमड. Yes sir, Supermud sir. उससे क्या करेंगे प्रोजेक्ट, उससे what is सर the इस पे outcome? हम सर यस सर, इस पे हम सर ब्रिक्स बनाते हैं सुपरमड पे सर. ये पीवीए जो सर हमारे पास एक केमिकल है, वो हम सॉइल में ऐड करते हैं सर. उससे फिर ये ब्रिक बनाते हैं सर, उसको टेस्ट करना है सर. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. टीचर कौन है आपका, सुपरवाइजर? सर डॉक्टर मोहम्मद आदिल. ओके गुड, ठीक हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. अस्सलाम वालेकुम सर. इस्लाम मुदस्सर. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. Sir, my name is Mudassir Zaman Afridi and my CGPA is 3.23 and I choose civil engineering by my personal choice and alhamdulillah. Sir, I don't have class number. Sir, I don't have class number because we are from JST. Sir, and alhamdulillah, I am satisfied from for choosing civil engineering. And my final year project is recycling up supermud bricks. And my future planning is to start my own business. Very good, very good. Business in which area? क्या करेंगे? यही सुपरमड से ब्रिक बनाएंगे? No sir, to start to register a consultant and play a role as a designer and as a CEO. ओके ओके ओके, गुड, वेल डन. इसके बारे में मैं ऑलरेडी कमेंट कर चुका हूँ, वो आप सुन चुके होंगे, वरना बाद में रिकॉर्डिंग में देख. Yes sir, yes sir. ठीक है, गुड. Anybody Thank else? you, sir. Okay, thank you. Anybody else who is left? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, my name is Afaq Ahmed Bara. My class number is 219. My CGPA so far is 3.1. Sir, I am in civil engineering by my own choice, and my current location is Peshawar. It's hostel number 5. Okay. So my final year project is retrofitting of bridge girders using FRP. My future plan is to go for higher studies. Okay, okay, ठीक है, thank you. Anybody else who is left? नोमान. सर. जी जी. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम. Sir, my name is Shafisal. जी. My class number is 0606 and my CGPA is 2.9. 0606. It's my own choice. 0606, yes. Okay, okay. It's my own choice and I'm satisfied now. Okay. My current location is Charsadda. My final year project is economical concrete with waste material. Okay. Sir, and my future planning is for the studies. Okay, good. Thank you, sir. ठीक है, welcome. Anybody else? नोमान, आप वापस आए हैं नोमान? Yes, sir. ठीक है, वो मैं आपकी डिस्कनेक्शन हो गया था. Yes, sir. ठीक है. नोमान, आप भी ये जब स्टूडेंट जिस तरह अभी अगर 28 हैं तो आप ये इमेज जरूर ले लिया करें, फिर इरफान को भेज दिया करेंगे ना, क्रॉस चेक के तौर पे. Yes, sir. ठीक है, ताकि ठीक है, सर. इरफान अली मेरे टी हैं, अभी शायद ज्वाइन भी करेंगे. मे भी ज्वाइन किया भी हो, मैंने देखा नहीं है. Join किए है, sir. ज्वाइन किया हुआ है. इरफान. वालेकुम सर. अस्सलाम. इरफान कैसे हैं? ठीक ठाक सर. इरफान, अटेंडेंस का आप कोई करेंगे कुछ सिलसिला? सर मैं अटेंडेंस इस क्लास की तो हो गई सर, पूरी ले ली सर. ठीक है, ठीक है. और इसके बाद नीट पे लेंगे, इस नोमान है इनसे मैं रब्ता कर लूँगा. ठीक है, ठीक है. नोमान, आप इरफान के साथ अपना नंबर भी शेयर कर लेंगे. इरफान, आप मुझे भी शेयर कर लेंगे. बल्कि इरफान एक काम करें, छोटा सा एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, ये 8 सेमेस्टर 2021 के नाम से. उसमें 2 CRs हो जाएंगे, आप हो जाएंगे और मैं हो जाऊंगा. तो अगर कुछ हमने डायरेक्ट दोनों से बात करनी है तो इजी हो जाएगा. ठीक है सर. ठीक है, तो ठीक है इरफान, आपने अगर अटेंडेंस ले ली बस आपकी जरूरत नहीं है, यू कैन अपने काम शाम आप करें, बस मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ.
ठीक है सर. Okay, ठीक है, thank you Irfan. अच्छा जनाब, so let's move further. Now let me introduce myself to you very quickly. I don't know, maybe you know me early before or no, I have no idea, but my name is Sayyid Muhammad Ali. I am professor of civil engineering. I have about 23 years plus experience as a professional engineer. I started my career in 1998 as with a consulting firm here in Peshawar. So I worked there for about like 5 years before joining the university, and I joined the university in the fall of 2002. And since then I'm here. I joined as a lecturer at that time, and now I'm a full professor. So you can see from the first bullet which I've written that consulting, research, management, and teaching, this is my core area of expertise. As a teacher, I'm in front of you. As a researcher, I'm there as a professor as well. Management I've written because I am the director of Earthquake Center, and I have to do the management of that facility. So I'm the director of Earthquake Center for the last, I would say, for about like 8 years plus. Have you seen the Earthquake Center, Noman? Yes, sir. Okay. So I will come to those details later on. My PhD is in structures. My focus was on earthquake and bridges. My area of specialty and working on non-destructive testing, seismic qualification testing. Seismic qualification testing is a newer field in Pakistan. I happen to be one of the pioneer in this area because this is something very unique. Seismic qualification testing means if you have any equipment, it can be an equipment related to civil engineering, it can be an equipment related to electrical engineering, it can be an equipment related to electronics, it can be an equipment of a hospital, anything, telecommunication. You need to do a qualification testing so that whenever there is a strong ground shaking because of earthquakes, it should survive that. And there are some international standards for that. So that is the area which I've been working for the last, I would say, how many years? Like about, I would say, 11, 12 years or so. So smart infrastructure, that is another area. Madam Hamna, I think, have you been taught by Miss Hamna? Aapko padhaya hai Hamna ne? Yes, sir. Okay. Hamna is doing PhD with me in a very interesting area, that is smart infrastructure, structure health monitoring. So that is another area in which I am working. Strong motion instrumentation, that is something very close to me, which I've been working for the last how many years, 15 years or plus. Strong motion instrumentation means whenever there is a ground shaking, one of the project, the student who is doing with Dr. Irshad, the amplification of the ground motion. So that is, those instrumentation are strong motion instrumentation. So that is one of my expertise, and I've been working on that for the last so many years. I visited several countries also. I've seen some big networks. For example, strong motion network in California, that is called CSMIP. CSMIP is the California Strong Motion Instrumentation Program. CSMIP. California Strong Motion Instrumentation Program. Tall structures, big structures in California are instrumented. One of the biggest seismic network, among the biggest networks in the world. So they have instrumented the structures for that. So I visited some of their facilities, met with their team. So that is one of my area of expertise. I'm very happy and always to mention that I've been member of Pakistan Engineering Council. There was a code, okay, two things actually over here. Number one is the code, and number two is the National Curriculum Development Committee. So there was a code which is called Pakistan Electrical and Telecommunication Safety Code. Pakistan Electrical and Telecommunication Safety PET SAC 2014. This was mainly electrical engineers. I was one of the civil engineers, but over there also we worked together and we gave the requirements for the
qualification of electrical equipment, which is one of my specialty area. Now it has become the law since 2014 because an SRO has been issued, statutory regulatory order has been issued that binds the electrical companies, for example, distribution companies like PESCO or AGISCO or LESCO or something like all of those, and other who are involved, that they need to seismically qualify the grid station equipment. Have you seen a grid station? Anyone? Yes, sir. कहाँ पर देखा है grid station? Sir, Bannu mein, sir. I am from Bannu. Okay, good. So the grid station has very important critical electrical equipment that should survive an earthquake, and that needs to be qualified. So that was one of that. तो मेरे साथ उस टाइम पे एक electrical power के student थे UET पिशावर के. He worked with me. I was the supervisor. Officially तो उनके supervisor कोई और थे, but I was the co-supervisor, but mainly he was working with me, and we did a test also on the shake table. So this is something unique work which I've been doing. I was also a member of the technical assistance team, which was formed by Pakistan Engineering Council to help the government of AJK because there was an earthquake in September, I believe, 2019. Yes. So we visited Mirpur, we gave a report which was then as an advice given to the government of AJK with regard to the damages which happened in Mirpur, Azad Kashmir. I am also Hausner Fellow. Those of you who are working in structures, they might be knowing the name of Professor George Hausner, who gave the concept of response spectra. Response spectrum or response spectra. So that concept was given by George Hausner. So in 2011, there was a call for a fellowship. And 5 fellows were selected from US and 3 were selected from developing countries. And you know, there are 145 developing countries. At least at that time, there were 145 developing countries on the list of World Bank. So there were 3 fellowships for the 145 developing countries. And fortunately, I'm very proud to mention and very humbled as well as the same time that I got selected for this fellowship. This was a very prestigious award. It was an international fellowship. So it was 2 years. We went to Ghana, also Africa, to see the construction of schools over there and see what how the things are being done over there. So it was an international exposure from that perspective as well. I also remained the member of Senate of UET for 3 years, I think 2005 to 2018, which is a policy-making body. The Honorable Chancellor chairs the Senate meeting. So policy formulations are done. So I remained there for 3 years. I've already mentioned I'm professor of civil engineering. I have authored 2 books also. Frankly, I don't remember my publication, 40 or so. I am less interested in publication and I'm more interested in impact. The work which I do should be critical for Pakistan, should be critical for KPK and critical for humanity. For me, that is more important than writing 1000 papers. So, ठीक है मुदस्सर मैं बताता हूँ आपने नाम का पूछा मैं दोबारा अपनी बात कंप्लीट कर लूँ. So for me, something which is impactful, which is useful, that is more important than writing papers that I tell you that my paper have an impact factor of 100 or 50 or 30 or 1000, and in reality on ground there is very little impact. So for me that is not important. For me more important is whatever I'm doing should be useful and contributing towards the society. Books ke naam jo hai, one book is from my PhD. I can share with you the ISBN number, and the other book which I've published is with Noman regarding the seismic qualification testing of electrical equipment. So these are 2 books. And there is one thing which I forgot to mention, and I'm thankful to Mudassir for asking.
I have written, Hamna and myself and Dr. Akhtar Naeem Saab, you might be knowing, हमारे dean थे अभी पीछे retire हो गए हैं. We are the author of that, and there is a article which is written in the Oxford Encyclopedia of Disasters, and that is related to climate adaptation with regard to Pakistan. And I'm very proud to mention that this article is published in Encyclopedia. We do publish books, we do write papers, which is definitely a very high value. But to me personally, writing for Encyclopedia is extremely honorable thing to do, because it is used as a reference. I can share with you it has recently been available in the hard print. It is from the Oxford Encyclopedia. You can search it on the internet as well. So one chapter written for Pakistan is by us. So this is something important. As I've mentioned to you, I am the director of Earthquake Center, which is the largest facility in Pakistan. Just give me 1 second, please. 1 second. Noman, 1 second chahiye. नोमान, आवाज आ रही है मेरी? Noman? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So Earthquake Center is the largest facility in Pakistan, 4th in the world according to 2008 reference. But anyways, 4th or 5th, whatever is the case, means it's a very big facility. I have the honor to install the first seismic shake table of Pakistan back in 2005 December. So, and the big shake table and other equipment, I'm very proud to mention, I've been working with these facilities. So I've also worked on CPEC projects. For example, one of the CPEC project was ML1. You might have heard the name of ML1. नाम सुना है ML1 का? Mainline 1. Okay. So this is, I think, $8 billion or $6 billion project, which is the dualization of track between Peshawar and Karachi, and the old bridges, historic bridges, which were constructed by British in 1870s and 1880s. So I'm very honored to mention that I have tested those bridges in 2015. Actually, we went to the field, we instrumented those bridges, and heavy specialized engines were brought from Karachi, and then we did the dynamic testing of these bridges. And Chinese and NESPAC were the main designers, consultant who needed this data, because they were doing the evaluation. And then I'm also proud to mention that I worked on another CPEC project, which is a $2 billion project. I mean, the construction cost I'm referring to. So that is the Lahore Orange Line project, Lahore Orange Line Metro Train project. We tested it was again a qualification testing. We tested the U-tub girders. And then there is one project, which is the Karot hydropower project. It is near to Shangla Swat. Just hold on. Just hold on. Just 1 second.
Sorry जनाब, I'm sorry for getting busy. असल में सेंटर की डायरेक्टरशिप होने की एक नुकसानात ये भी हैं, बाज़ दफ़ा कॉल्स आती हैं, आजकल है भी ऑनलाइन लिमिटेड स्टाफ, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला होता है। नोमान आप साथ ही है ना? यस सर। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था करोड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शांगला स्वात. सो this I think this was January 2019. There was a requirement for again it was sort of a qualification testing that the penstock needed to be tested. So we pressurized that penstock hydrostatically, and then we kept it at that high pressure, 1.5 times the design pressure, so that there is no leak, and then it should have a full recovery. We installed strain gauges. So I'm just giving you some glimpses. There are so many other projects which I have done. If I start talking on those projects, I think I will need the full whole day, which we can't do. So I just wanted to give you glimpses. So before I go to the next slide, if you have any comment, any question, please go ahead. Anyone? Excuse me, sir. Janab. Sir, if you don't mind it, sir, CPEC spelling has been jabbled. If you correct it. Sorry, आमिर, मैं आपकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया, दोबारा बोले. सर CPEC की स्पेलिंग सर जबल हो गई है सर, अगर आप फिर करेक्ट करें सर. CPEC पे क्या हो गया? सर ये जो स्पेलिंग है सर, CPC सर गलत लिखा है सर. Okay. Thank you for correction. Let me mark it over here. Okay, CPEC. अब ठीक हो गया? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है जनाब. कोई और कमेंट? एनी कमेंट? कोई कमेंट नहीं है. नोमान, मंसूर? नो सर. नो सर. चले आगे चलते हैं. लेट्स गो फर्दर. ये तो आपकी उसकी रिक्वायरमेंट है, आपके क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस में इट इज गिवन अटेंडेंस. लेट्स डिस्कस द कोर्स आउटलाइन. Before I go to the course outline, let me again tell that this subject, which is actually composed of two things, one is called the I would say up to this point, this one, that is the project planning and management, and the next one, this one portion, is primarily engineering economics. There are some miscellaneous topics as well, but engineering economics predominantly. The entire subject, I would suggest, I would comment that is very, very important. When you are in the field, whether you are a geotechnical engineer, whether you are a highway engineer, whether you are supervising, you are a site manager, whether you are a structural engineer, water resource engineer, the success will revolve around how effective and how good project manager you are. That is critical. That is vital. If you are very good in technically, but if you are not a good project manager, your projects will be failing. You will be having difficulties, completion difficulties, cost overruns, problems. So you need to be good in project management. So our first portion will be related to project management. So let's go into the course. So today is our first class. We are just doing the introduction. Second, we will start with what is a project, what is a program, what is a portfolio, what are definition, and what is work breakdown structure. So some very critical things we are going to understand. I think this will be the first formal time in the 4 years of your education that you are being exposed to this subject. Civil engineering practice was the other subject which you have already done. That is also very important. But from the management perspective, this is the first time you will be learning this subject. So over here, if you see in the next third class, week number 3, we're going to go for management processes. What are different groups? What are the roles and responsibilities of engineer and project manager? So you have to know tomorrow when you're standing in a field as a site engineer or a project engineer, or if you're a project manager, what are your roles and responsibilities? This is very, very important to understand. So over here in the first, these two classes, so we'll be getting exposed to the fundamentals of
what to do, how to do, what is required, what is being asked, and so on. Then in this week 4, we are going to be studying the project life cycle. We will be discussing what is Planning Commission of Pakistan, how the projects are achieved. I just gave you example of CPEC projects. I just gave you an example of Lahore Orange Line Metro Train project. So what is the role, how they get approved, and so on. So we'll go across those. Some of you said we are going to have our own business. We have a construction company. So you will be, by one way or the other way, getting involved with the actions or the details or the instructions which are given by the Planning Commission of Pakistan. You will be following those rules and things like that. Then there are funding agencies. We will talk of those. Then we will talk briefly on what is fast track construction. You'll talk on those. And I'm going to couple your subject of which we just studied in the last semester, which was civil engineering practice, with over here also specifications and many things. Then we are going to touch on project schedule. Any project which you are doing in the field will have certain activities. You are going to plan it. You're going to execute it. You're going to do some analysis for that. So CPM and PERT, etc., we are going to touch on that. So this will be also important. By the way, there will be, you have the lab course also, if I'm not wrong. Noman, lab course hai? Yes, sir. Usme over there you are going to study the softwares. Over there you are going to study the softwares. अच्छा, एक बात I must emphasize that generally the project managers or managers, they are highly paid jobs. For the reason, because the entire success of project depends upon them and they have a lot of huge responsibilities. Please keep in mind, the more responsible you are, the more critical job you have been assigned, definitely typically your salary will be accordingly fixed. So you should be in as a planning, as a part of your training, you should be getting aware that you should be good person in terms of taking the responsibilities. Those people who avoid taking the responsibility, those people who are not initiating, who are not good initiators, who don't take initiative, who are slightly keeping themselves back, I'm telling you, there will be a problem. You will not be getting tougher assignments, challenging assignments, and then accordingly, resultantly, you will be lagging behind. So keep this in mind. ये याद रखें, जितनी आप responsibility ज़्यादा लेंगे, जितना आप अपने ऊपर बोझ लेंगे और काम करने का commitment show करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको definitely काम भी मिलेगा and उसी हिसाब से आपको position भी मिलेगी और फिर उसी हिसाब से आपकी salary भी होगी. By the way, please keep in one thing in mind. I generally, मैं ये हमेशा इस बात को कहता हूँ स्टूडेंट्स को, अभी भी मेरी जो लास्ट आपके जो दूसरे सेक्शंस उनको भी कहा था लास्ट सब्जेक्ट में भी, कि डू नॉट ऑलवेज बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कि सैलरी कितनी अच्छी है. नेवर एवर ट्राई टू जज और कैलकुलेट योर जॉब. आई मीन ये कहना कि मेरी जॉब अच्छी है वो इसलिए अच्छी है कि मेरी सैलरी अच्छी है. दिस इज नॉट द क्राइटेरिया. प्लीज कीप इन माइंड, सैलरी विल बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, but it is not the criteria. So you might be going for a lower salary as compared to a higher salary, but the job would be polishing you more, will be job की nature ऐसी होगी, आपको polish अच्छा करेगी, आपकी CV में weight अच्छा डालेगी और कल के लिए आप और आगे बढ़ना आपके लिए आसान होगा. That will be of strategic nature. तो ये बातें भी ध्यान में रखें. और बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप अच्छे अगर प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, तो जो सक्सेस है वो आपके लिए आसान होगी, कामयाबी आपको आसानी से मिलेगी. आगे चलते हैं जनाब. रिसोर्स मैनेजमेंट पे हम आएंगे, रिसोर्सेज की बात करेंगे. व्हाट आर रिसोर्सेज, हाउ टू मैनेज देम, प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या होता है, सुपरविजन क्या होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. दिस इज इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक चीज जो मैं बताना शुरू में भूल गया, व्हिच आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स,
I believe that more than 80% jobs will be related to, which will be available to you, will be related to these two subjects which I generally teach. एक project management वाला और एक CP वाला. More than 80%. 20% or less will be jobs purely design की, कि जी आप आ जाएं, highway design कर दें, geometric design कर लें. इसका हरगिज मतलब, this does not mean that the subjects which you are studying for RCD and foundation and all those, they're of no use. No. Don't get me wrong. Don't get me wrong. When you will be standing in a field as a project manager or a site supervisor, not as a designer, you will still need those concepts to apply in the field. Don't get me wrong. You will still need those skills and knowledge. For example, CBR, for example, compaction, optimum moisture content. For example, if you're a geotech person, if you are a RC, reinforced concrete is your sub area of expertise or interest, then rebars and cutting and negative reinforcement, positive reinforcement, and so many things. So please keep in mind that I'm talking about the nature of job, that as an implementer, as a supervisor, there are more jobs generally available than as designer. That is not discouraging. Don't get me wrong. I'm trying to set the perspective. So the point I'm trying to make is you should be open-minded. BSc is a generalized area, I would say, because you are studying structure, you are studying highway, you are studying many different fields, surveying, and then in your masters you're going to specialize in certain area. So on the basis of your graduation, BSc, the jobs which are generally available will be more of supervisory nature, contract management. This is another very big area, very highly paid area, contract management. So those will be the openings which will be generally available. So next, coming to week number 7, project scoping, bidding, project appraisal, selection, and pre-construction planning. So these are very critical things which we are talking. I think you have done this process, studied this bidding. ये पढ़ा आपने, Noman? Mansoor? Yes, sir. ठीक है. So, Yes, sir. Okay, good. We are going to couple this over here. कि project के scope के साथ कैसे जोड़ेंगे, appraisal कैसे होता है. We are going to go through those things. Then we are going to touch a topic which is very important, which is earned value management, S-curve, and other miscellaneous topics. So by doing this, we'll be actually having our midterm. Then we will have our midterm. Then coming to the 9th week, from that perspective. Actually, it is 10th week, but as far as teaching is concerned, we are talking of this thing as 8th week and then 9th week. Introduction to engineering economics, very, very important. This is again a new subject which you are going to touch. Very interesting, very important. You must have heard the name PC1s. ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. PC2s, right? So PC1 and PC2 ask for engineering economic input as well. What is the present worth? Which option is better, and so on and so forth. You have to do economic analysis. So the basic concept, principles, time value of money, this we are going to study. Very different things. You will be exposed to entirely different things. I'm sure about that. And you will enjoy that, by the way. Methods of economic analysis, present worth analysis. It will help us, for example, if we are constructing a dam, for example, and we have option 1. We are in the design stage and we are going for option 1, and then we have another option 2. And both have different costs. Option 1 is costing you rupees 1 billion. And option 2 is costing you rupees 1.5 billion. Maybe this is economically more viable than the 1 billion. Because this is just the initial cost. There will be running expenses over the life of this project for 20 years or 30 years. So we are going to put them in under one spotlight to check and work. So this is something which we are going to do in that.
Then we have annual worth and future worth analysis, and their examples. You will see these methods. One is called the future worth analysis, one is called the annual worth analysis. We'll study those concepts. IRR, internal rate of return, how it is used in projects, what is inflation, what is depreciation, different types, taxes, etc. We are going to check, we'll study those concepts as well. Various types of cost like maintenance cost, repair cost, overhead cost, benefits, and etc. We are going to study those as well. And then we'll do another very interesting topic, which is called break-even analysis. We are going to do this. We're going to do the break-even analysis. Just hold on. So break-even analysis is especially those आप में से कुछ लोगों ने कहा कि business start करेंगे. So break-even means the investments which you are making, when your investments will be equal to the, I mean your cost will be equal to your inflow. आप जो earn कर रहे हैं और जब आपने invest किया वो आपस में जब बराबर हो जाएं वो कब होंगे? तो we will talk of that. Very interesting topic, very important. And lastly, the 15th lecture will be related to business organization और labor laws और miscellaneous बातें हम इस पे करेंगे, किस किस्म की types of business organizations and so on and so forth. तो this will be your entire course outline. यहाँ पे कोई questions हो आपके? सर जी ये जो इंटर्नशिप होता है ना सर, जी जी सर लेट सपोज हम साइट पे कर रहे होते हैं तो हमें जो है ना साइट के बारे में सर पता चल जाता है एज ए सुपरवाइजर वगैरह. सर ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जो मतलब स्किल हम किस तरह एक्सेल करेंगे, इसमें सर इंटर्नशिप वगैरह मिल सकती है सर? देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. देखिए दो बातें हैं. आपने कहा प्रोजेक्ट मैनेजर इज ए पोजीशन. सीनियर पीपल बिकम प्रोजेक्ट मैनेजर. आप लोग ही इंशाल्लाह जब आप फील्ड में काम करेंगे एक दिन आएगा, डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रोजेक्ट पे. अगर छोटे नेचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन कहीं पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है हाउसिंग कॉलोनी की, आई एम फोरसीइंग मे बी 4-5 साल में आपको मैं सुनूं कि जी फलानी कोई छोटी सी कॉलोनी बन रही है, आई एम द प्रोजेक्ट मैनेजर. लेकिन अगर आप एक रोड की या ब्रिज के प्रोजेक्ट्स की बात करें, मे बी आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, 12 साल का एक्सपीरियंस, यू बिकम ए प्रोजेक्ट मैनेजर. और अगर डैम्स वगैरह के हैं तो उसके प्रोजेक्ट मैनेजर, जारी बात है, इट डिपेंड्स अपॉन दी नेचर, कम्प्लेक्सिटी एंड योर एक्सपीरियंस दैट व्हेन यू बिकम. हर पोजीशन की जनरली एक कोई ना कोई प्री रिक्विजिट, प्री डिफाइंड, एक यूनिवर्सल किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे तो जारी बात है आपको इंटर्नशिप उस तरह नहीं मिलती, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के साथ, आप प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम के साथ अगर आप काम करेंगे तो यू विल बी ऑन दैट पाथ एक्चुअली. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टीम क्या होगी? यू आर सिटिंग इन एन ऑफिस वेयर यू आर प्लानिंग कि जी हमने अगले 1 साल में क्या एक्टिविटीज करनी है, अगले 1 महीने में क्या एक्टिविटीज करनी है, अगले 1 हफ्ते में क्या करनी है, और आज क्या एक्टिविटीज करनी है और कल क्या एक्टिविटीज करनी है, क्या रिसोर्सेज लगेंगे, फिर उनको ट्रैक करना एंड सो ऑन. So if you become part of that project planning team or project management team, so you ultimately go towards project management. तो ये तो एक project management की वो बात की, ऐसे बड़े projects जहां पर पूरी full fledged independent team है सिर्फ project management की, ये बड़े projects की बात हो रही है. अगर आप छोटे projects की बात करते हैं तो वहां पे multi dimensional काम जो है वो एक ही टीम कर रही होगी. जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम है वो प्रोक्योरमेंट भी कर रही है, वही प्रोजेक्ट प्लानिंग भी कर रही है, उनमें से कुछ लोग साइट सुपरविजन भी कर रहे हैं. तो इट डिपेंड्स कि आप किस फर्म में हैं. तो बड़ी फर्म्स में इफ यू आर वर्किंग इन ए वेरी लार्ज फर्म, सो एज आई सेड दे विल हैव स्पेशलाइज्ड सेक्शंस हु आर जस्ट लुकिंग आफ्टर वन टाइप ऑफ थिंग्स फॉर मे बी वन प्रोजेक्ट और मेनी प्रोजेक्ट्स. एंड इफ यू आर वर्किंग इन ए स्मॉलर फर्म देन यू विल बी वर्किंग ऑन मेनी थिंग्स सिमल्टेनियसली. तो अब आप मुझसे अगर ये पूछें कि अच्छा क्या है, ये आपने पूछा नहीं लेकिन मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है कि नाउ विच वन इज बेटर. तो पहली बात तो ये है कि इफ यू आर सो फॉर्चुनेट दैट इन योर राइट हैंड और योर लेफ्ट हैंड यू हैव वन ऑप्शन, इन योर अदर हैंड यू हैव द अदर ऑप्शन. सो नाउ we're in the position of decision making, so then we are deciding. So I hope you have this option. But anyways, even if you have no option, if you are striving, so my personal thought, मेरी ज़ाती ख्याल ये है कि if you work initially in your career in a smaller organization, you get to know many things.
एट द सेम टाइम। आप साइट पे जा रहे हैं, सर्वेइंग भी सुपरवाइज कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी बना रहे हैं, कंक्रीटिंग हो रही है उसको भी देख रहे हैं, प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं उसको भी देख रहे हैं, क्लाइंट का विजिट हो रहा है, वो आपसे इंस्पेक्शन हो रही है वो भी आप हैंडल कर रहे हैं, एंड सो मेनी थिंग्स। बड़ी फर्म में सिर्फ ये नुकसान हो जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एरिया को देख रहे होते हैं, एंड यू उसकी अच्छी बात ये होती है कि यू बिकम मास्टर एंड देन इन वन एरिया। But I believe as a young engineer, you should be exposed to many, many things before you go to a big firm. But this is my thought. Maybe you don't agree with me. Maybe many other professionals won't agree with me. But this is what I think. And I believe this is a better approach. याद रखें, इस किस्म की बातें हतमी नहीं होती हैं। कोई इसमें एक हार्ड लाइन यस और नो की नहीं होती है, पास और फेल की नहीं होती है। There are gray areas. कुछ advantages हैं, कुछ disadvantages हैं। So it has to be generally seen from a broader perspective कि आपको क्या चीज सूट करती है। Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Anybody else with any comment or question? Comment or question? वैसे एक चीज मैंने नोट की है, I have observed students generally I see they have tendency of not asking question. I don't know why. Very less people, very less students come forward and ask question. And I tell you कि teacher की जो teaching है, that the quality of teaching is just not how good I am teaching. The quality of teaching, I believe, not all of it, but a big part of it will be revolving around how much interest you take and how many questions you ask and how good questions you ask. So if you ask good questions, I believe the lecture becomes, the teaching becomes more meaningful, more fruitful, and it becomes better. And if nobody asks any question, this is my opinion, then I believe my teaching is not, will not be ultimately, if I scale it on a scale of 100, I believe a portion will be missed out. So this is so important for me at least, that you have questions asked about the things which I'm telling. देखिए ये कैसे हो सकता है कि मैं आपको ये चीजें बताऊं और आपके जहन में क्वेश्चन ना हो? ये कैसे हो सकता है? I mean, for me it is totally not natural, very, very artificial that you have no questions. क्यों जनाब? हमजा, आदिल, आमिर, नोमान? Yes, sir. Yes, sir. You are absolutely right. हाँ तारिक, क्वेश्चंस ना हो तो टीचिंग अच्छी नहीं हो सकती, ये मैं बता दूं। और आई डोंट नो, मैंने ये देखा है कि हमारे स्टूडेंट्स में बहुत कम टेंडेंसी है। बाज दफा कहते हैं जी बाज टीचर खफा होते हैं। आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, आई हैव नो आइडिया। मैं पिछली बात कर रहा हूँ, पिछले से मुराद पिछले बैच की बात नहीं कर रहा, पिछले वैसे जनरलाइज बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, बट फॉर मी इफ यू डोंट आस्क क्वेश्चन, इट अपीयर्स कि मैंने आपको पढ़ाया ठीक नहीं है। मुझे तो ये लगता है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि if you have no question, there are two possibilities. One extreme possibility is I have taught you super extra excellent. Nobody in the world can teach like me, and it was so perfect that now you have no question. And मैं खुद कहता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। इतना अच्छा मैं कभी भी नहीं पढ़ा सकता कि मैं दुनिया के सबसे अच्छी टीचिंग में कर लूं। This is impossible for me. तो ये बात तो मैंने खुद रूल आउट कर दी। तो दूसरे एंड पे रह जाती है बात कि आपको मेरी किसी बात की समझ ही नहीं आई, क्योंकि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन यू हैव नो क्वेश्चन। क्वेश्चंस आर देयर व्हेन यू अंडरस्टैंड द थिंग्स पार्शली और not completely, but there are something is left, and nobody, and by the way, no student is so perfect कि वो एक लेक्चर में हर चीज 100% सीख जाए। ये हो नहीं सकता, नामुमकिन में से बात है। तो इसका मतलब क्वेश्चंस होने चाहिए। ये पॉइंट मेरा ये है। टीचिंग भी अच्छी नहीं हो सकती परफेक्ट, और स्टूडेंट भी परफेक्ट सीख नहीं सकते। रिजल्ट है क्वेश्चन एंड देन आंसर्स। और अगर ये प्रोसेस हमारी क्लास में नहीं होगा तो आई विल बी अनहैप्पी, एटलीस्ट फ्रॉम माई पार्ट। मुझे नहीं पता आपकी तरफ से। मंसूर? सर यू आर राइट सर। तो मंसूर आप राइट हैं। कोई कमेंट? आपने अच्छा है कमेंट किया, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है?
सर अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछूं, ये सर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जी जी सर ये इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आता है सर? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सर या ये अलग से कोई? जी बहुत अच्छा सवाल किया, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ए जनरलाइज्ड नॉलेज, जिसमें देखिए दो तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। बीइंग सिविल इंजीनियर, दो तरह की जॉब्स हो सकती हैं आपकी। नंबर वन, यू गो टू ए डिजाइन फर्म एंड यू स्टार्ट डिजाइनिंग ए प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल, you are working on a design of a Moman Dam project. Your entire team is working on Moman Dam and you are designing the spillway and retaining structures and the embankment and so many things. So you need the project management skills to plan your project, that when you're going to do the geotechnical investigation, when you're going to use the softwares and geotechnical and whatnot. Construction management, when you talk of construction management, then you're talking that you're standing in the field, now you're constructing that dam or road or bridge or any township. Now you need the specialized skill set that how to manage that construction. Whereas project management is a generalized broader. So construction management will be utilizing the skills of project management. So I could say in simplified words, construction management will be a slight specialization to the project management. Somebody raised hand? Afaq. Yes sir. जी आपने, you have raised hand? Yes sir, ये by chance हो गया ऐसे। अच्छा चले, कोई इशू नहीं। तो I hope it is clear. Yes sir. Okay. Thank you sir. ठीक है, मैं जस्ट क्योंकि टाइम भी शॉर्ट हो रहा है, मैं ज्यादा आपको बिठाना नहीं चाह रहा, क्विकली मैं जरा इन स्लाइड्स पे गुजरूं। आपके क्वेश्चंस हो तो प्लीज नेक्स्ट टाइम जरूर पूछें। असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो वीक 5 में होगी, सबमिशन उसकी 6 वीक में होगी, असाइनमेंट 2 12 वीक में होगी, सबमिशन 13 में होगी, क्विज 1 और 2 आपके 6 वीक और 13th वीक में इंशाल्लाह होंगे। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने टेंटेटिव लिखी है, प्लीज। टेंटेटिव का मतलब सिर्फ इसलिए चूंकि ऑनलाइन वर्सेस फिजिकल क्लासेस का मामला है, तो अगर ये वेटेजेस चेंज हो तो कल आप गिला ना करें कि सर आपने तो ये बताया था कि ये इस तरह होंगे और इनमें थोड़े चेंज आ गई है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि मेरे हिसाब से ये सामने पॉलिसी है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन दी ऑनलाइन जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, जो भी चेयरमैन डिसाइड करेगा, डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, अगर उसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल होती है, थोड़ी बहुत, आप ज्यादा हम ये नहीं कह रहे कि फाइनल टर्म जो है वो 10 मार्क्स का हो जाएगा और मिड टर्म जो है वो 50 का हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। थोड़ी बहुत स्लाइट एडजस्टमेंट चूंकि पास में हुई है, ऑनलाइन और फिजिकल का सिलसिला है, तो इसलिए मैंने टेंटेटिव का वर्ड यूज कर दिया है। अदरवाइज जो है वो वेटेज बाय एंड लार्ज इसको यही रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई चेंज हो तो थोड़ी बहुत हो भी सकती है। और ये हमने CLOs वगैरह आपको सारे यहाँ पर दे दिए हैं, आप इसको देख भी लें। 3 CLOs हैं आपके, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, एनालाइज गिवन डेटा एंड एवेल्युएट द प्रोजेक्ट। सो इसमें वो एक्शन वर्ड्स जो है वो अवेलेबल हैं और PLOs के साथ लिंक है। और याद रखें कि ये सब्जेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरा ख्याल में PLO 11 जो है वो बहुत कम सब्जेक्ट में एड्रेस होता है। हमारे दूसरे जो पिछला सब्जेक्ट था 4 to 1 का, उसमें भी कुछ थे, मेरे ख्याल में PLO 11 था गालिबन, और कुछ एक आध सब्जेक्ट में और में है, तो उस हवाले से भी ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको भी आप देख लें। एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट आर CLOs, कैसे पास करना है, सो यू नो दैट दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स। ये मेरा ईमेल भी आपके सामने है, इरफान का ईमेल भी आपके सामने और इरफान का नंबर भी, तो नोमान आप काइंडली जरूर एक्सचेंज कर लें इस नंबर पे। इरफान को अपना नंबर दे दें आज इस क्लास के फौरन बाद, ठीक हो गया? ओके सर। और बस मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का ये भी असूल है कि आप टाइम पे शुरू करें, टाइम पे खत्म करें। ये कोई कमाल नहीं है कि मैं आपको आधा घंटा फालतू बिठा के रखूं। आज हम 3 मिनट लेट हैं, अपॉलॉजीज फॉर दैट। आई विल ट्राई कि हम 8 बजे शुरू हो, लेकिन आप लोग भी थोड़े से लेट थे, 10-15 मिनट हमने वेट किया। और आइंदा काइंडली बी इन टाइम। मैं हमेशा, आप देखेंगे मेरी कोशिश होगी कि मैं 15 मिनट्स 10 मिनट्स अर्ली अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो विद दिस आई फिनिश। और ये मैं लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, लेक्चर तो अपलोड किए, रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम उस टाइम पे बात कर लेते हैं, ताकि बाकियों का टाइम वेट ना करना हो, आपने नेक्स्ट क्लास को भी शुरू करने आगे। ओके, थैंक यू। Okay, thank you, sir. वेलकम। थैंक यू। ओके जनाब, आप लोग सारे लीव करेंगे तो आखिर में आई विल बी लीविंग।